Hello. Very good, good evening to all of you. Okay, welcome to our दम है तो करके दिखा MCQ challenge platform को East Coast Education से provide କରୁଛି ଜବରଦସ practice series ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜୋଶର ସହିତ welcome and ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆମର class ଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଟିକେ share କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ and ସମସ୍ତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦବ ଓକେ just give me a few seconds ମୁଁ ଖାଲି ସେୟାର କରିଦଉଛି ଓକେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଫ୍ରିରେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହବ ଦେନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ଫ୍ରିରେ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମିଳିବ ଓକେ ଫ୍ରିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବ ଦେନ୍ ସେ ଜାଗାରେ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପିଲା କଞ୍ଜୁସି କରନ୍ତି କଞ୍ଜୁସି କରନି ଡୋଣ୍ଟ ବି କଞ୍ଜୁସ ଓକେ ଜିତିବାର ଅଛି ନାଇଁ ଯଦି ଜିତିବାର ଅଛି ତମକୁ ଦେନ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭିଡିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଓକେ ଯଦି ଜିତିବାର ଅଛି ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଦମ ଅଛି ତେବେ କରି ଦେଖା ଓକେ ଟିକେ ଖାଲି ସେୟାର କରିଦଉଛି just give me a few seconds I will share this video to all of you guys ओके देखो क्वेश्चन ର आंसर दियो ସମସ୍ତେ କଣ ରହିବ ରାଇଟ आंसर जल्दी दियो राइट आंसर दियो कौन होगा राइट आंसर दो तो जस्ट टिके ना व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज ऑफ मिनरल्स इन सॉइल कंपोजिशन 5 35 45 25 कौन रहिबो पछ गुंचा दियो नाही पिला राइट आंसर मते अच्छा राइट आंसर 45 होगा ना कौन रहिबो 45 टिके है ना राइट आंसर कौन 45 होगा ना तो एवरेज परसेंटेज ऑफ मिनरल्स इन सॉइल कंपोजिशन इज 45% कौन 45 ओके नेक्स्ट देखो व्हेन व्हिच सर्कमस्टेंसेस डज द वाइस प्रेसिडेंट एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ओके कौन रहिबो राइट आंसर आर दियो समस्ते कौन रहिबो आर राइट आंसर टी दियो समस्ते जल्दी आंसर दियो दबा कर लाइक करो कमेंट करो शेयर करो दम हक करके दिखा सीरीज को समस्त को स्वागत है ना अच्छा चलो आरंभ हो बिगिन करबा क्लास टू हला देखो पिलाने in what circumstances does the vice president assume the office of the president okay कौन रहो during casual vacancy due to death resignation and removal of otherwise and देखिबा only when parliament declares it and when its president is not is on the foreign visit only during elections okay को circumstances रही परियो does the vice president assume the office of president okay प्रणाम मंजरी है ना vice president से जगह रे assume करि परिबे president करो जगह टाक ओके रहिबो कोन पिला राइट आंसर कोन रहबो है ना ड्यूरिंग ना कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू डेथ रेजिग्नेशन एंड रिमूवल अदरवाइज ओके तो सही समय रे ऑप्शन ए हला ऑप्शन ए रहबो राइट आंसर हला ऑप्शन ए राइट रहबो एई समय रे से जगह वाइस प्रेसिडेंट इज एज्यूम कर परिबे ओके मन रखतो नेक्स्ट बा अंडर द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज बैन आफ्टर 2006 प्रीति प्रणाम है ना बैन्ड आफ्टर 2006 एंड 7 है ना तुम्हें कहीं देखा नथलो बरा क्लास रे देखो फूड सब्सिडी रिलीज एक्सटर्नल फॉरेन सोवरेन बॉन्ड एंड आरबीआई फाइनेंस डेफिसिट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रांट टू स्टेट ओके अंडर द फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट एक्ट
2003. Which of the following was banned? Food and safety. Okay, देखिए कौन होगी राइट आंसर. ओके, आरबीआई फाइनेंसिंग ऑफ डिफिसिट. ओके देखो ऑप्शन 3 रहे ना. क्वेश्चन भल बुझन मंजरी. देखो गोटे जिन ना प्रीति प्रीति सॉरी है ना. फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रोची बजेट मैनेजर 2003 ओनली विद द फॉलोइंग बैन आफ्टर 2006. ओके, दैट इज वाज आरबीआई फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट. ओके, आरबीआई फाइनेंसिंग ऑफ डेफिसिट. ओके, ऑप्शन 3. नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर मॉडरेट लीडर्स. ओके, आ भीतर कोडा मॉडरेट लीडर हमें जानिबा. ओके, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बानर्जी. मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट दुई जन थिले. तो आ भीतर मॉडरेट हम काहा को गणिबा कौन रहे प्रीति एंड बंदरी. प्लीज समस्त अनुरोध प्लीज टिके लाइक एंड शेयर एंड टिके सब्सक्राइब कर देन एंड जदी कर दीजो देन बहुत धन्यवाद. एंड जो माने करिनो से मानन को टिके कहि दियो एना टिके शेयर कर दियो. इसे हम्बल रिक्वेस्ट. ओके, आमर धमाकादार क्लास को समस्त को केमिति लागुची है ना. जोश रो सहित पढ़िबा. जोश है तो आगे बढ़ेंगे. ओके, देखो पिला माने ऑल ऑफ द अबव रहइबो हला. कोन रहइबो ऑल ऑफ द अबव. ओके, 1 2 3 4 समस्त को हम मॉडरेट लीडर भाबे जानिबा. कोन रहइबा मॉडरेट लीडर. ओके, नरमपंथी लोक ऑल ऑफ द बहुत बड़ा. हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा. ओके, किए फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा. ओके, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड करे लोकसभा रे. बहुत रे क्वेश्चन पचारछि किंतु एमसीक्यू रे तो कोई टाइप रे पड़छि क्वेश्चन पर प्रीवियस क्वेश्चन रे हला. ए क्वेश्चन पड़छि कोन करियो एडा स्पीकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर. ओके, हैं हैं काटी देलो भलो कर. पीएम कोन देखुतला तू हैं मु तो गोसेगर पे बेहोश हो जंदे ले. कोन प्राइम मिनिस्टर कोन एते थोर क्लास करेला पर प्राइम मिनिस्टर के लिखु दे स्पीकर. ओके, स्पीकर. ओके, ऑप्शन ए इज राइट आंसर स्पीकर. ओके, मंजरी एंड प्रीति है ना. ऑप्शन ए हैला प्राइम मिनिस्टर बोल आंसर दो तो तू कोन करियो है ना. तो व्हाट ऑथोरिटी डज द सुप्रीम कोर्ट हैव ओवर लॉ infringing on basic rights. कौन रही यार राइट आंसर. infringing देखो हार्ड वाटर प्रोसेस आर कौन करिया है ना. अथॉरिटी डज सुप्रीम कोर्ट हैव ओवर लॉज infringing on basic rights. It can declare the law null and void. It can delay its implementation. It can rewrite the law. It can request parliament to amend it. yes बहुत बढ़िया मंदिर प्रीति. ऑप्शन 1 is right answer. And it can declare the law null and void. Okay, declare law null and void. The Supreme Court have over law infringing basis on rights. Okay, now which of the following Khajuraho group of temples is built entirely in granite and is originated northeast and southwest. Okay, ना कौन रे बा which of the following Khajuraho temple को Khajuraho temple दा जोड़ा build करते entirely granite रे बना जाय छै है ना. oriented north east and south east oriented. जे कौन रहबो मंजरी एंड प्रीति. एंड ऑल ऑफ यू जो माने भी देखु तो से मानुस को बहुत बहुत अनुरोध प्लीज टिके लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो है ना. ऑप्शन सर चौसुरी जोगिनी टेंपल, देवी गौरदम्बा एंड टेंपल एंड कंदरिया महादेव टेंपल एंड लक्ष्मण टेंपल. ओके, जदि देखबा राइट आंसर पिला माने कोन हबो. यस ऑप्शन है. यस ऑप्शन है चौसुरी जोगिनी टेंपल. ओके, चौसुरी जोगिनी टेंपल इज द राइट आंसर. ओके, चौसुरी जोगिनी टेंपल ओडिसा रे गोटे चौसुरी जोगिनी टेंपल अछि. से जिल्लार नाडा कमेंट बॉक्स रे दया करे लिखि दियो. ओके है ना. Sayyid dynasty was formed by which of the following ruler in Delhi? Okay, कमेंट बॉक्स रे लिखो पिला माने दबा कर लाइक करो, आंसर दियो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो है ना. इमिति कर दियो आज रे पाठ पढा जिमिति सब दिन पाठ पढा उठ किछि भिन्न रहितो सेमति पाठ पढा. ओके ना है ना. निज पाठ पढा गुटे स्ट्रक्चरल वे रे नियो जोड़ा कि प्रतिदिन तुम एटा लाखि मु आउ टिके मेहनत खाली करबी, आउ टिके मेहनत खाली करबी है ना. एई टाइप रे कहि चलो. ओके, कोन रहइबो पिला माने है ना. ऑप्शन 4 इज राइट आंसर. ऑप्शन 4 है ना. कौन रहबो है ना. खिजार खान. ओके, खिजार खान मोहम्मद नहीं यार खिजार खान वाला ऑप्शन दे दिया तो खिदार खान वाला. शायद डायनेस्टी वाज फाउंड बाय द खिदार खान रूल दिल्ली हैला है ना. खुर्दा ना खुर्दा नहीं हैला. देखो ऑप्शन 4. ओके, ऑप्शन 4 इज राइट आंसर ई जगह रे. ओके, नेक्स्ट देखो है ना. वीडियो टी संपूर्ण देखि पारिबो से ही सफल पाइबो. ओके, जे जे वीडियो टी संपूर्ण देखि पारिबो आज से ही सफलता पाइबो ना. 40 टा क्वेश्चन
40टा क्वेश्चन तार पेशेंस नहीं सी आगू कौन पढ़ो अर्थात कौन है तुम पेशेंस परीक्षा चलती ओके पेशेंस परीक्षा ना सकाल तो बहुत पिला आसथिल ना which of the following is a community driven folk dance Uttarakhand that originated in the Kumaon region okay है ना the following community driven dance ଗୋଟେ community special ଅଛି ସେ community dance करे folk dance ବୋଲି ଜଣା ଯାଏ ଆମର ନା उत्तराखंड रे होउची ओरिजिनेट ହେଇଛି ସେଟା କୁମୟୂନ ରିଜନ ରେ ଅଛି ତ କଣ ରହିବ ନା କୋଉ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲା पांडव नृत्य अर्थात रासलीला एंड ख्याल एंड झोरा कोटा को ये डाला बलांगीर की सर्च करो रासलीला केम देबो अरे कुमयून रीजन अर्थ होची एटा उत्तराखंड रे हला कुमयून रीजन अछि तो से जगह रे कोन हो ओके एटी ऑप्शन रहबो झोरा हला झोरा ओके ऑप्शन 4 प्रीति पाठ पढ़ा पड़ी टी कम गेला ना कोन तुमरो किस्सा बोलतो तुमे है ना देखो झोरा इज राइट आंसर हला पांड्या अब रासलीला अब ख्याल उत्तराखंड रे पहाड़िया अंचल गोटे मन रखी जगह रासलीला यही टाइप रही खायाल यही टाइप मे भी न है पांडव यहाँ गोटे कौन साउंड होनी से टाइप ना 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 लॉजिकली देखिए गोटे मैच हो ओके ये झरा गोटे टाइप मैच दे लॉजिक देख ओके बहुत गुड गुड इवनिंग सुनील वेलकम है ना देखो राइट आंसर द राइट टू इक्वालिटी मे बी कंस्ट्रेंट टू द सिटीजन बाय द स्टेट टू कौन रहे ओके right to equality may be constrained to the citizen by the state to maintain uniform among the citizens, prevent economic disparities, allow for welfare policies benefiting marginalized sections, and force strict law and taxation. Okay, आगु को गोटे फेमस लोकंकर इंटरव्यू आनुची मु क्लास बहुत दिन जल्दी आनिबी ओके से बहुत भलो पोजीशन रे अछंदी है ना तो स्टे ट्यून थिबो समस्त टिके तांकर वीडियो भी देखियो केमति लागुची कहयो ओके बहुत जल्दी जानूची फेमस पर्सनालिटी माने कि से गोटे कमिशनर लेवल रो पोस्ट अछन ओके तो तांकर गोटे इंटरव्यू आनुची तो हम रहयो राइट आंसर आर पो हला ऑप्शन सी यस ना टिके बोल्ड दुस्ती सेरा पे ना देखो राइट आंसर ऑप्शन 3 हला इट अलाउ फॉर वेलफेयर पॉलिसीज बेनिफिट मार्जिनलाइज्ड सेक्टर्स right equality may be constrained to citizens okay in the state which of the following programs was launched in 2000 to improve cold storage facility for agricultural products in India okay है ना शीतल भंडार जो कुहा जाए है ना the following programs was launched 2020 को प्रोग्राम टा लॉन्च कराइतला ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ग्रामीण है ना बंधन योजना एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को योजना अनुजाई कौन आम कौन एग्रीकल्चर स्टोरेज फैसिलिटी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी को इनक्रीज करा ओके फैसिलिटेट करा 2000 मसीह को स्कीम था रही ओके बहुत पिला मे भी न जानी पारती तथा मु कही दूसरी ग्रामीण बंधन योजना ओके ऑप्शन अच्छा ना ना ये ऑप्शन 2 होगा मन नुआ क्वेश्चन आस बहुत पिला आंसर दे पारना आई नो बहुत नुआ क्वेश्चन आस बहुत पिला आंसर दे पार न मु कहूची ना तुम प्रैक्टिस करो यार देख क्लास टा अंत तो माइंड रही स्टेट गवर्नमेंट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अगर माइंड फिट है देन तुम एग्जाम दे पास हो ओके ग्रामीण है ना वंदन योजना ओके नेक्स्ट बा द सुफिक सेंट्स लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश ओके सुफिक सेंट जन थिले जिस इल्तुतमिश शामसुद्दीन इल्तुतमिश जे थिले तांको समय रो के थिले सलीम चितिश बदरुद्दीन कना जकरिया एंड देखा गेसु दर्ज एंड निजामुद्दीन औलिया देखो पिला माने ऑप्शन 2 बहादुद्दीन ओके बहादुद्दीन इज राइट आंसर बहादुद्दीन जकरिया ओके बहादुद्दीन जकरिया ओके सलीम कोड आइला इटा ऑप्शन भी हां ऊपर अछि हां ऑप्शन 2 है ना ऑप्शन 2 हो प्रीति मंजरी एंड सुनील ओके ऑप्शन 2 हो ना नेक्स्ट बा द फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड ऑन द व्हिच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओके 4 नंबर अमेंडमेंट अच्छा ये क्वेश्चन जगह ना हमको सर एटा गोटे क्वेश्चन है तो भाई साहब ये क्वेश्चन जगह पचार परीक्षा ओके तो आमको ट्रेडिशनल वे जो पाठ पढ़ुचे जो एमसीक्यू करूचे से गुडा को हम देखिया पड़ो ता सहित एई प्रकार क्वेश्चन जो देखिया पड़ो काले को जगह भीतर पचार दो मे बी रिपीट हे पे गैस पर को जगह क्वेश्चन तो माइंड को स्ट्राइक हो ए टाइप क्वेश्चन रो हमको फॉर्म भी जमा पड़ियो कि ए टाइप रो पचार फोर्थ अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन was passed under which prime minister Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi
यस जवाहरलाल नेहरू हम लॉजिकली भी तुम देखो फोर्थ अमेंडमेंट माने केबे हेतिबो फोर्थ अमेंडमेंट केबे हेतिबो गोटे कथाटे कोन है ना मन इन जनरल भाबो फोर्थ अमेंडमेंट केबे 1950 मसिया पाका पाकी हेतिबो ना नहीं है ना नहीं 1950 समय से टाइम रे कोन 4 जदी 44 हेतले अलग था 4 हिज ना तो से जगह प्राइम मिनिस्टर लेवल पर चलची है ना लॉजिक जदी तुम से जगह खाली इस्तेमाल करलो 1950 सुधा की हेतिबो ना जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन 3 इज राइट आंसर मोरारजी देसाई होबनी मोरारजी होबनी तो जवाहरलाल नेहरू होबा ना मोरारजी देसाई तो बहुत लेट आसले ओके तांको बहुत क्रिटिसाइज भी करन लोक माने हला मोरारजी देसाई मन रखितो no which of the following statement is are incorrect regarding the 5 year plan okay कौन लिखा है देखो पिला माने incorrect what is incorrect कोड़ा ठीक नहीं है regarding the 5 year plan first 5 year plan prioritized agriculture development to address food insecurity and the 5 year plan was based on the Horodomar model okay कौन रहिबो all of the above देखो neither statement one neither two हला देखो एटा हम राइट हला neither हबो बस बस incorrect नाही सब ठीक अछि धन्य प्रभु धन्य मंदरी सुनील एंड प्रीति देखलो क्वेश्चन देखलो एबे 5 गुड 1 मार्क कटि जायता ना नहीं हैं एबे सिना ऑनलाइन रे भाग पड़ती बोली तमे हेलो जदि 1 मार्क कटि जायता ना नहीं हैं कौन ही था नेदर और नॉर स्टेटमेंट होला काहे कि एडी कौन पचारती इनकरेक्ट रिगार्डिंग पचारती बहुत बढ़िया प्रीति चालाकी सहित जीति जायछ ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंपैरिजन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है ना कौन रहबो which of is the correct comparison between east and west coastal plains of India okay coastal plain is पचारती correct पचारती चला now the west coast is wider and marked by larger delta and the eastern coast is more intended with better natural harbor and west coast and west coast is narrow and contain prominent natural harbor east coast is more backwater and lagoon that west coast बी हबो ना ना बी हबोनी बी हबोनी पिला माने देखो देखो मु कोन को यार एक्सप्लेन मु करि दोथिला यार एक्सप्लेन देखो टिके गोटे सेकंड दे मु खाली ब्लैंक पेज कोड मु जेडा रे स्क्रीन स्क्रीन अच्छा रे ब्लैंक पेज नहीं मते जणा नहीं बजे ओके देखो देखो पिला ने देखो हमरो ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट भीतर पजे क्वेश्चन को करेक्ट पचारछि करेक्ट कंपेयर विथ ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न ऑप्शन 3 ओवर आइटन हला वेस्ट कोस्ट इज ए नैरो एंड कंटेन प्रोमिनेंट नेचुरल हार्बर ओके देखो हमरो ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट रहला एटा हमरो ईस्टर्न कोस्ट एटा वेस्टर्न कोस्ट है ना एटा टिके छोटो अछि हला कोन बे छोटो अछि कोन बे एटा अपलिफ्ट हे गयो उठी गयो छला एटा नेचुरली पोर्ट पय हैबिटेबल ओके किंतु जेति की नदी रो पानी बाहरछि सब ईस्टर्न कोस्ट रे पड़छि मैक्सिमम तो ई जगह कोन होछि डेब्रिस ई जगह फील हिछि तो अल्टीमेटली ईस्टर्न कोस्ट लॉन्गर जोटा की नेचुरल हार्बर पय हैबिटेबल नुहे तो ऑप्शन 3 होबो राइट आंसर वेस्ट कोस्ट इज नैरो एंड contain the prominent natural harbor okay next ba which of the following uprising was primarily linked to protest against a road construction project by the British military Bhil rebellion coal uprising Mapla uprising and the Jaintia and Garo rebellion कौन रहिबो मंजरी प्रीति प्रीति मंजरी मंजरी पळेले सुनील पळेले ना कौन सब क्वाड जाउ तो सब हैं क्वाड सब जाउ तो बफरिंग प्रॉब्लम होती कि ओके बहुत बड़ा जैंतिया एंड गारो रेबिलियन ओके जैंतिया गारो रेबिलियन दुईटा अपराइजिंग वाज प्राइमरी लिंक टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटिश मिलिटरी ओके कौन भाई गारो खाइछा जैंतिया कारण से माने अलगा ट्राइब मानु को फॉरेन ट्राइब मानु मतलब कोन घृणा करथले बहुत डॉक्यूमेंट देखिदिबो कि हेड हंटर्स माने से जगह थिले है ना तो तांको ट्राइबल रे एमदी थिला कि जदियो तुमे अगेंस्ट पार्टी रो सर्कलम करी आसतो मुंड काटी आसतो देन इट इज द प्राइड ओके तो से टाइप रो से जगह जे रास्ता घाट भी हे जसो से जगह रे एता तो ब्रिटिश मिलिटरी मानको भितर अगेंस्ट युद्ध बहुत बड़ा हिंसा चल जाला हला देखो नेसिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड एंड द लद्दाख एक लक्षद्वीप ग्रुप सॉरी है ना फॉलोइंग इज द वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड of the Ladakh group sorry Lakshadweep group Ladakh ko Lakshadweep group okay Lakshadweep group ro sabu western most island kon ati Kavarati Agati Kadmat and Minicoy okay
देखो एई टाइप रो क्वेश्चन टा मे भी तुम स्किप कर दे पार क्वेश्चन परीक्षा रे कारण खाली फालतू रे रिस्क काई नबो एते छोट जिंस मन पड़े ना अगाती हो राइट आंसर हैला अगाती गोटे वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप रो अगाती गोटे होची कोन है ना अगाती होची गोटे ग्रुप ऑफ है सब ना काली मोर कोन हेबो बोली जदी मु एबे भाबी बसी सेतो मु वर्तमान रे केमि बंची है ना नहीं काली जदि मोर कौन हम बोली भावी मु आज वर्तमान में केमिति अछि तो समस्त अनुरोध वर्तमान रे बंचो काली रो कथा छाड़ आज बंचो एमिति जिंते काली आउट पॉजिटिवली सहित बंचो काली आउट नुआ जोश आशा एंड उद्दीपना सहित आगु बढ़ियो ओके तो डोंट वरी अबाउट इट फॉर फ्यूचर आज भलो करो तो काली और बेस्ट हो होला मोर प्रीतियन मंदिर लव ऑफ यू ओके नेक्स्ट जीवा as per the national sample survey what was identified as the pronounced deprivation in well-being in India. Okay, as per national sample survey, what was identified as the pronounced deprivation in well-being in India? Economic growth, poverty, unemployment, high literacy rate. अरे किस्सा हल्ला मोर मोबाइल लगो देखो इट इज पॉवर्टी होगा पिला ना पॉवर्टी इज राइट आंसर पॉवर्टी होगा राइट आंसर ओके पॉवर्टी अनएम्प्लॉयड प्रीति प्राय पॉवर्टी दारिद्र्य होला दारिद्र्य होला राइट आंसर ओके कौन लगे नेशनल सैंपल सर्वे करछि व्हाट आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस deprivation in well-being in India. Okay, poverty. President of India authority is explained which of the following. Okay, है ना प्रेसिडेंट को टाइप रे एक्सप्लेन इंडियन पेनल कोड हिसाब रे देखिबा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखिबा सिविल प्रोसीजर कोड को रूप में प्रेसिडेंट को देखिबा ए जगह रे कमेंट बॉक्स रे समस्त लिखो प्रेसिडेंट को देखो इधर देखिबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता सहित हमर प्रेसिडेंट रिलेटेड होछन एसोसिएट होछन ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी इज एक्सप्लेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वे ओके कॉन्स्टिट्यूशनल वे ओके सिविल प्रोसीजर होनी कॉन्स्टिट्यूशनल वे होबो सिविल कोड आसे सिविल आसे हाईएस्ट अथॉरिटी पर कॉन्स्टिट्यूशन को से ये करनते ओके नेक्स्ट बा व्हिच स्टेटमेंट ऑन सी राजगोपालाचारी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज करेक्ट है ना which statement on C. Rajagopalachari, member of the Constituent Assembly, is correct? He was the first Speaker of Lok Sabha under independent. He was the Governor of Tamil Nadu. He was the Chairman of Constituent Drafting Body of India. He was the first and last Governor General of India after independence. Okay, D. Okay, both good option D is right answer. Na? He was the first and the last Governor General of India after independence. Okay. देखा the famous Kailas temple at Ellora was built by whose dynasty okay Kailas temple Ellora रे जो अछि से को डायनेस्टी दे राष्ट्रकूट होयसाला पल्लव एंड चालुक्य को माने तयारी करिसंती बिल्ड करचंती पिला माने कमेंट बॉक्स रे लिखो जल्दी जल्दी की लिखो जल्दी 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 की लिखो जल्दी क्लास ता मजा लागुची ना नहीं पिला माने कहले देखा कहा को क्लास ता बोरिंग लागुची मते हाथ रे लागे ओके क्लास ता मजा लागुची यस लिखो जाको बोरिंग लागुची नो लिखो ओके अरे एति तो पार्टिसिपेट करो इतना डरपोक हो क्या तुम लोग ओके राष्ट्रकूट वो पिला ओके राष्ट्रकूट ओके राष्ट्रकूट ऑप्शन ए इज राइट आंसर ओके व्हिच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया फीचर्ड केव टेंपल्स carved out of rock with intricate बुद्धिस्ट हिंदू एंड जैन आर्टवर्क ओके मजा लागुची बहुत बढ़िया प्रीति है ना मजा लागियो पाठ पढियो जे हो ताको मजा लागियो सब दिन एमिति आनंतु हां आनी डेफिनेटली ओके Which UNESCO World Heritage Site in India features cave temple carved out of rock with intricate Buddhist, Hindu and Jain artwork? Okay, Udayagiri, Badami, Ellora, Elephant. देखो तमरी आगे बहुत पिला आछंती बहुत पिला जाइछंती ओके बहुत पिला हम क्लास को आछंती बहुत पिला हम क्लास को जाइछंती है ना किंतु तुमे दुई जन जो अछ आज पर्यंत धन्यवाद तुम दुई जन को आज पर्यंत कंसिस्टेंट लागि रहिछो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन इन ईस्ट कोस्ट एजुकेशन जर्नी एंड गोटे गिव अवे करा जिवो एंड तुम दुई जन को से जगह बहुत किछि माने ईस्ट कोस्ट एजुकेशन तरफ किछि गिफ्ट प्रोवाइड करा जिवो ओके तो आउ समस्त को एति अनुरोध कि प्लीज टिके लाइक से सब्सक्राइब कर दो ओके देखो राइट आंसर कौन हो पिला माने एलोरा केव चला ऑप्शन 3 एलोरा केव हो राइट आंसर एलोरा केव खेलने जीवा
which committees try to create criteria to determine which language to include in the age schedule. Okay, को committee इनती रही थिले जे कौन करले क्राइटेरिया करथिले कि को लैंग्वेज जो करले एज शेड्यूल रे किमती करा जिवो कि करले मंडल साहा कमिटी सेन पटेल कमिटी वर्मा कृष्णा कमिटी पेशवा एंड सीतकांत महापात्र कमिटी. ओके ना फावा ना फावा फावा सर पेशवा ना फावा एंड सीतकांत महापात्र. आज्ञा आज्ञा आज्ञा. ओके 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 ओके. देखो पिला माने 4 नंबर राइट आंसर जे होला 4 वाला पावा एंड सीता एटा टिके मार्क कर देखो जेते नुवा क्वेश्चन आछि ना जेते नुवा क्वेश्चन आछि पिला समस्त स्टूडेंट माने मु कहूची जेते कि नुवा क्वेश्चन तुम देखु जे तो 2-3 दिन भीतर नुवा क्वेश्चन बहुत देखि दियो ना जे से गुडा को तुमे ये कर दियो ना नोट कर दियो जो माने नोट कर परछो तो भल कथा नहले बारंबार सेटा सुनो मन रहि जे होला which the following subject have no mention in the state list of the 7th schedule and the Indian Constitution. Okay, then I would the roles in a different state list, concurrent list and the union list. सेही गुडा को समस्त टिके आखि पकई था को सब्जेक्ट रे केति की कोन को पार्ट रे को लिस्ट रे केति की पार्ट कोन रहउची कोन सेगुला उठे आखि पकई देथला ओवरऑल ऊपर ऊपर को घोसिया दरकार नहीं देख रही चलो डेली दितर देख तो मन रही कौन पुलिस रिलीफ ऑफ डिसेबल अनएम्प्लॉयमेंट रूरल्स एंड रेलवे. नो इट इज रेलवे होगा 4 नंबर है ना स्टेट लिस्ट स्टेट अंडर आसेनी गोटे जिनस लॉजिकली भाव पुलिस आसे स्टेट लिस्ट रे रिलीफ एंड डिसेबिलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ओके गोटे जिनस देखो राज्य सरकार जेतो टीवी रे देखो समस्त गाली गंदी कि फलाना मंत्री फलाना चीफ मिनिस्टर ओडिसा रे कोन करदला एते फ्रीबीज देइथिला एबे कोन करदला है ना एति की भाषण देइथिला कोन करदला. ओके तो स्टेट अंडर आसे एटा कहला ब्यूरल ग्रांट्स. ओके एटा का अंडर आसे हो ना को जगह रे कोन करे बेले डिस्कस करा जाय ना को जगह मसानी करा जिवो हो ना को जगह कोन करा जिवो ए सब को डिस्कशन करा जाय ए सब डिस्कशन करा जाय स्टेट रे किंतु रेलवे टा गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट हो ना रेलवे टा गोटे सेंट्रल सब्जेक्ट एति लॉजिक धरि चलो का रेलवे टा होचे रेलवे होचे कोन सेंट्रल सब्जेक्ट यूनियन ले जिवो ना मन रखितो ना जिबा which of the following statement is correct regarding Swaraj Party. Okay देखो Swaraj Party है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट. ओके आ भीतर कोडा Swaraj Party है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट अंडर जाए है ना. Swaraj Party was formed by C.R. Das and Motilal Nehru. C.R. Das was president and Motilal Nehru one of the the secretary of Swaraj Party. C.R. Das opposed the non-cooperation movement and left Congress. In the Kolkata session, Congress proved the non-cooperation movement. कौन रहे वो पिला माने अच्छा टिके स्लो अछि बोध इंटरनेट है ना सबु 8:33 मु तो भाबुली 9टा जेथि बोली टाइम भी मु देख नथली है देखो ऑप्शन 4 हो पिला माने ओनली 1 एंड 2 हैला ओनली 1 एंड 2. ओके नेक्स्ट जीवा 1 कोन दिसी स्वराज पार्टी वाज फॉर्मड बाय द सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू. ओके स्वराज पार्टी सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा बना जायछि एंड तापर देखो अरे कोन हला C.R. Das was the president and Motilal Nehru was one of the secretary of Swaraj Party. Okay केते बडा इंपोर्टेंट पॉइंट पाई लोक लगे केते बढ़िया इंपोर्टेंट पॉइंट आइडा हो ना केते बडा इंपोर्टेंट पॉइंट आइडा ए पॉइंट तुम कोड खोजिले पाई थांद कहलो मते आगे देखिबा हैं 124 कोन हला अच्छा 124 होबे 1 2 होला ए पॉइंट तुम कोड पाई थांद मंदिर एंड फिर देखलो ए पॉइंट तुम केते बढ़िया पाइलो ए जगह हो ना एमसीक्यू माध्यम रो जीएसबी क्लियर हो जेती समस्या मन रख होला. How many major banks were nationalized by Prime Minister Indira Gandhi in 1969? Maximum time ये question टा मोहन छी within मंदरी maximum time ये question टा मोहन छी कौन रहेगा right answer. So how many major banks were nationalized by the Prime Minister Indira Gandhi? Okay 28 10 14 12 14 इज राइट आंसर है ना. नेक्स्ट देखो सफल होगा चाहूंती कि निजर दृष्टिकोण को बदल. ओके सफल होगा चाहूंती कि निजर दृष्टिकोण को बदल तो देखिए शैली चेंज कर पिला माने सब किछि सफलता मिल. ओके नेक्स्ट जीवा हला ओके तो रहला बफरिंग मो मोबाइल रही इला कोन करिया. ओके the wood
The wood fossils part located which provides evidence of the third age marine past is located in Jodhpur, Rajasthan, Akal near Jaisalmer, Amra Bamsar near Jaisalmer, and Bikaner, Rajasthan. Boss, এটা হবে রাইট आंसर অপশন 2 ହେଲା অপশন 2 হবে রাইট आंसर প্রিতিন মন্দির ওকে অপশন 2 না বহুত কিছু শিখিয়া মানে এই কোশ্চেন তুমি এই জিনিস কোড জানি থাকতো কইলো এই কোশ্চেনটা তুমি এটা কেমতি জানি থাকতো এই এমসিকিউ কোন তো এটা জানি বি ন থাকতো না না এমসিকিউ জয়েন করো which group rule Gupta ruler is credited with the founding Nalanda dynasty in Nalanda University okay किए गुप्ता रूलर थे नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करथिला क्रिएट करथिला ओके credited okay the whose Gupta ruler is credited with founding Nalanda University Kumar Gupta Sri Gupta Kumar Gupta प्रथम Sanganda Gupta कुमार गुप्त प्रथम होला द्वितीय प्रथम भितर प्रथम होला कुमार गुप्त प्रथम हो पिला माने कुमार गुप्त प्रथम इज राइट आंसर ओके कुमार गुप्त प्रथम हो राइट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा ना व्हाट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न व्हाट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कॉल्ड ओके ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रहला एडा होला नै तार साउदर्न पार्ट को हम कोन कहया ए जगह रे कोरमंडल कोस्ट कर्नाटक कोस्ट कोनकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट इट इज कोरमंडल कोस्ट है कोरमंडल कोस्ट को हजला जो इंडियन कोस्टल प्लेन रहला कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन साउदर्न पार्ट को कोन कहया हमें कोरमंडल कोस्ट ओके बहुत बढ़िया कोरमंडल ट्रेंड जाउची सुनथिबा ना नै व्हाट इज द की प्रिंसिपल अंडरलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट ensures the real executive power exercised by the elected government okay first presidentialism and the parliamentary democracy federalism and the judicial supremacy key principle underlining the functioning of the union executive okay union executive ভিতরে কি কি জানতে কইলো দেখিবা union executive ভিতরে that ensure the real executive power আচ্ছা কোশ্চেনটা বুঝি পালো না কি কি ন বুঝি পালো মু আউথরে ক্লারিফাই করে দউছি पार्लियामेंट बहुत बढ़िया ना यूनियन एग्जीक्यूटिव पद यूनियन एग्जीक्यूटिव माने होचन गोटे हला हमर के रहला प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा के प्रेसिडेंट लोकसभा राज्यसभा के रियल एग्जीक्यूटिव पावर एमानो पाकर था चला का पाकर एमानो पाकर अछि ओके तो ए जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऊपर राइट आंसर है का ऊपर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लोकसभा राज्यसभा एंड है ना पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज राइट आंसर नहीं जीवा अरेंज द फॉलोइंग मुगल रूलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ए टाइप रो क्वेश्चन जाको समस्ती टाइम नष्ट करी तो सेटा गुटे भाबी जे काम करला मुगल रूलर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अरे यार काम से ना अकबर शाह द्वितीय अकबर शाह प्रथम शाह आलम द्वितीय मोहम्मद शाह रंगीला लास्ट क्वेश्चन दिला ने आ परे ओके एला राइट आंसर कोन ऑप्शन 4 है ना हां यार नेट इशू अछि कोन करियो आज टी सब मोर नेट कोन काम दोनी मु तो एटा हो लॉन्ग वीडियोटा कोन हबो बोल गिरी ओके ने तो एटा 4 नंबर है मु पीडीएफ पठे दी ओके डोंट वरी हां अच्छा एटा देखो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ओके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन सहित कोडा संबंध राइट आंसर हम कोइ दछु 1 ना 2 या 3 राइट आंसर 2 गुजरात प्लेन इज फॉर्म रिवर लाइक नर्मदा तापी माही एंड साबरमती तीन द तीन होची एवरेज वाइड एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लेसर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ओके थैंक यू एवरीबॉडी पार्टिसिपेशन एंड तुमर स्वप्न बड़ अछि कि ताहाले से गुडी को छोट छोट भाग विभक्त कर दियो एंड निजर स्वप्न को साकार करो ओके थैंक यू एवरीबॉडी